हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था चिकित्सक चतुष्पाद और क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन, पेशेंट, नर्स एंड मेडिसिन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में, कि कितने टाइप्स के डिजीज आयुर्वेद ने क्लासिफाई किए हैं। ओके, तो उसका यह श्लोका यहाँ पे दे रखा है, टू फोल्ड एंड फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। रोग व्याधिकरण, रोग व्याधिकरण। तो पहले मैं बता देता हूँ कितने टाइप्स के आयुर्वेद ने डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। सो डिजीज मीन्स रोग। टू टाइप्स के डिजीज होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। साध्य, साध्य एंड असाध्य, साध्य एंड असाध्य, साध्य एंड असाध्य। साध्य मीन्स ऐसी डिजीज जो इजीली क्योर हो जाती है। डिजीज डिजीज विच आर क्यूरेबल। असाध्य डिजीज जो कि मुश्किल से क्योर होगी। डिजीज विच आर डिफिकल्ट टू क्योर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रोग टू टाइप्स के होते हैं, साध्य एंड असाध्य। साध्य इजीली क्योरेबल डिजीज, असाध्य डिफिकल्ट टू क्योर डिजीज। अब नाउ साध्य एंड असाध्य टू टाइप्स में और क्लासिफाइड है। दे बोथ आर क्लासिफाइड इनटू अनदर टू टाइप्स, दैट इज सब टाइप्स। द साध्य, इन साध्य another disease, another type comes सुसाध्य, सुसाध्य। ओके, सुसाध्य मीन्स क्यूरेबल है, वेरी इजी क्यूरेबल, और आई कैन से इजीली क्यूरेबल। एंड अनदर कम नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट सब टाइप कृच्छसाध्य। कृच्छसाध्य मीन्स डिफिकल्ट टू क्योर। Difficult to cure. Then asadhya types. In asadhya, first type is yapya. Yapya. Yapya means manageable. We can manage this disease. Means manageable disease. And then another one is anupkrama. दूसरा टाइप क्या है असाध्य का? अनुपक्रमा। अनुपक्रमा, incurable, cannot be cured. Incurable disease cannot be cured. So these are the types and subtypes of disease. Disease are of two types: sadhya, asadhya. Sadhya, asadhya. Sadhya curable disease, asadhya difficult to cure. In sadhya, another two types are susadhya and krishsadhya. Susadhya are easily curable disease, krishsadhya are difficult to cure disease. Asadhya are of two types: yapya and anupkrama. Yapya disease are manageable disease, they are not curable but we can manage them. Anupkrama, incurable disease, we cannot cure this type of disease. Now we can check the shloka of this. साध्य असाध्य इति व्याधि द्विधा। साध्य, okay, asadhya, okay, iti means in this way, vyadhi, vyadhi means disease, dvidha means two, sadhya and asadhya iti vyadhi dvidha, तो तू पुनर्द्विधा। तो तू means ये दोनों, तो तू means these both, पुनर्द्विधा, these both are again divided into two types. Okay, तो तू means these are again, पुनः means again divided into, द्विधा means two type, द्विधा means two type. साध्य असाध्य इति व्याधि द्विधा, तो तू पुनर्द्विधा। सुसाध्य, साध्य disease first type, सुसाध्य, and कृच्छसाध्य,
Sadhya disease second type. And Yapya Asadhya's first type. Yapya and Anupkrama. And Yacha Anupkrama. Yacha Anupkrama. Asadhya two types, Yapya and Anupkrama. Sadhya asadhya iti vyadhi dvida. तो tu punadvida susadhya krichashadhya yapya yacha anupkrama. Okay. In this verse, Acharya Vagbhati lays down the fundamental binary and quaternary taxonomy of clinical prognosis in Ayurveda. All diseases first classified into macroscopic categories based on whether medical innervation can annihilate them. Sadhya, curable disease; asadhya, incurable disease. Susadhya, easily curable disease. Mild or acute conditions revolving quickly with minimal non-invasive medication. इजिली क्यूरेबल डिजीज जो ऐसे ही नॉर्मली ठीक हो जाता है, जिसमें मेडिसिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम कहते हैं सुसाध्य. कृच्छिशाध्य, डिफिकल्ट टू क्योर कंडीशन नीडिंग कॉम्प्लेक्स रिग्रेस लॉन्ग टर्म थेरेपी सच एज सर्जिकल मेथड. कृच्छिशाध्य ऐसी डिजीज है जिसमें हमको सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सर्जरी का यूज करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको क्योर करना. यहाँ पे मीन्स पैलिएटिव chronic uncurable conditions where the patient survive as long as they follow a non-negotiable lifetime regimen of diet and therapy. अब यहाँ पे डिजीज में क्या होता है, पेशेंट बीमार है, पेशेंट इज डिजीज्ड एंड दैट डिजीज इज डिफिकल्ट टू क्योर. उस डिजीज को क्योर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उस पेशेंट को उस डिजीज के साथ ही सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं, मैनेजेबल बना सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बेस्ट डाइट प्लान. ओके, डिजीज है लेकिन एक अच्छे डाइट के कारण उसकी इम्यूनिटी चल रही है और उसके कारण वो सही है. अनुपक्रमण, टर्मिनल highly advanced pathological states completely non-responsive to therapy where any medical innervation is fertile. अनुक्रमण डिफिकल्ट टू क्योर है, जहां पर कोई भी ऐसी डिजीज नहीं, मतलब कोई भी इलाज नहीं है डिजीज को सही करने का, उसे हम कहते हैं अनुक्रमण. ओके, नेक्स्ट साध्य डिजीज. क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर इजीली क्योरेबल डिजीज. सुसाध्य लक्षण. सो सुसाध्य डिजीज क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, तो सर्वो औषधक्षमे, ठीक है. ओके, सर्व औषधक्षमे मीन्स capable of tolerating all therapeutic drugs and treatments. सभी ड्रग्स को, ट्रीटमेंट्स को झेल सकने वाला क्या है, सुसाध्य में आएगा. ओके, सर्वो सदक्षमे. देह यून, यून मीन्स युवा, यंग पर्सन. ऐसी बॉडी, देह ऐसी बॉडी जो सभी मेडिसिन को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके. दैट बॉडी विच कैन tolerate all therapeutic drugs and treatments is susadhya. Deha yuna puncha jitatmana. Yuna means that person is young. Easily curable disease is present in a young person. Punso means person. Jitatmana, self-controlled mind and diet. Jitatmana means self-controlled mind and diet. So in susadhya, susadhya means easily curable disease are present in a young person, in a young person. Okay, which is capable of tolerating all therapeutic drugs and treatments, and that person is self-controlled over science, mind and diet. This is the lakshan of susadhya disease. Amamarg, and another word is trying to explain the susadhya disease, that is amamarg, not located in vital structural joints and organs. अगर किसी को क्या हुआ है, डिजीज हुई है, तो वो डिजीज वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. मीन्स in susadhya disease are not present in vital organs. In Ayurveda it's like मर्मा. अगर डिजीज मर्मा वाली लोकेशन पर लोकेटेड नहीं है तो ऐसी डिजीज को हम इजीली क्योर कर सकते हैं, वो सुसाध्य डिजीज होगा. अमर्ग. अल्प हेतु, माइल्ड और मिनिमल कॉजेटिव फैक्टर्स. जो डिजीज है वो माइल्ड होना चाहिए, ठीक है. अल्प हेतु disease should be mild. अग्र रूप, mild early और pre-monitory symptoms. सुसाध्य डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिनके हमको पहले से ही सिम्टम्स मिल जाते हैं. सिम्टम्स कैन बी सीन pre-monitory symptoms can be seen early, that are सुसाध्य disease. Okay, अग्र रूप. अनुपद्रव means completely free from secondary complication. No other secondary complication. That is सुसाध्य disease. अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति.
अतुल्य दूसरे देश ऋतु प्रकृति. Here we can see. Wait. Atulya. So the diseases are Atulya. Atulya means I will write like this. Atulya Dusya. Atulya Dusya. The affected tissue differ in nature from dosas. Affected tissue differ from dosha. Okay. तो जो भी डिजीज है, जो भी अफेक्टेड टिश्यू है, वो दूसरे दोषों को अफेक्ट ना करे. द अफेक्टेड टिश्यू डिड नॉट differ from dosa. Okay. Then atulya dusya देश. Dusya देश. देश means that geographical region is different from dosas. Geographical region different from dosa. Different from dosha. दूसरे देश ऋतु प्रकृति. ऋतु means season. Season also is different from dosa. Differ in dosa. And then last word is prakriti. Prakriti means the body constitution different from the dosa. Body constituent. It in all, this word is saying that atulya, there is no difference, there is no comparison. Means if issues, base, ritu and prakriti, all are those not affecting the dosas, a particular dosas. Okay. Pada sampadi. Next one is pada sampadi. The 4 pillars should be there. The 4 pillars. What are 4 pillars? Chikitsa, chatuspada, physician, then medicine, then nurse, then patient. These are 4 pillars. Pada sampadi. For sukh sadhi disease, pada sampadi should be there. Okay. 4 pillars of treatment. Grahesu anuguneshu. Grahesu anuguneshu. Grahesu anuguneshu. Means graha means planets. Planets. Anuguneshu means their alignment. There is a perfect alignment of planets in susadhya disease. Ek dosa marg. Grahesu anuguneshu. Then here ek dosa marg. Ek dosa marg. The susadhya disease involving a single dosas affected. Ek dosa marg, single dosa affected. Nava sukha. Okay. Nava means newly onset condition. Sukha means curable disease. So this is a curable disease. In a curable disease, in a that curable disease present in a young person, okay, which can tolerate all types of medicine, all types of treatment. So सुसाध्य डिजीज वो डिजीज है जो कि एक यंग पर्सन में मिलेगा, जो कि सभी टाइप्स के डिजीज को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है. जो डिजीज होती है सुसाध्य वो अममर्ग होती है. अममर्ग मीन्स क्या बताया था? That not located in vital structures like marma points. Alpahetu. Alpahetu means mild positive factors. And agrarup means pre-monitory signs are available, early signs are there. Anupadrava. Okay, sorry. Anupadrava means completely free from secondary complications. कोई other चीज उसको affect ना करे. Atulya dusya देश ऋतु प्रकृति. Atulya dusya देश ऋतु प्रकृति means the dosas are not affected by देश ऋतु प्रकृति and tissues. All sympathies for susadha disease, 4 pillars of treatment should be there. In susadha disease, grahesu anugunesu means graha's alignment should be properly. Ek dosa marg means there is only affection of one dosas, only one dosas should be affected. Nava sukha means the disease is newly and this is susad. Okay. Read these all in PDF. I have already explained this. This couplet defines the clinical condition under which an illness can be cured. Susadhya. A highly favorable prognosis requires the patient to be young, strong, and mentally self-controlled. In susadhya disease, patient should be young, mentally self-controlled. Patient जवान होना चाहिए और self-controlled होना चाहिए. Pathologically, the disease must be freshly contracted, never limited to single channel, ekmarg, driven by single dosa, and localized away from vital organs without complications. डिजीज कैसी होनी चाहिए? नए होनी चाहिए, एक ही दोसा अफेक्टेड होना चाहिए, एक ही मार्ग अफेक्ट होना चाहिए, वो लोकलाइज होना चाहिए और वाइटल ऑर्गन्स में नहीं होना चाहिए. ओके.
The core factor for a quick cure is the principle of non-alliance, atulya. If the qualities of the ventilated dosas do not match the patient's bodily constitution, location, current season, the disease cannot develop deep structural roots, supported by the optimal quality of the four clinical pillars. Recovery is very rapid and simple. Okay. Complex, chronic and incurable pathology, which asadhya lakshana. So what are incurable diseases? Okay. Shastra adi sadhana. Shastra adi sadhana. Shastra adi sadhana. Krich Shankarecha Tato Gada. Krich Shankarecha Tato Gada. Shastra adi sadhana managed via sharp surgical tools, alkali और cauterization. ऐसी डिजीज जिनमें हमको शार्प फिजिकल टूल्स की जरूरत पड़े, हमको कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़े, अल्कलाइन मेडिसिन की जरूरत पड़े, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कृच्छादी डिजीज. We are studying asadhya disease, in which first one is कृच्छाद्य. Sorry. We are discussing about susadhya disease now. Susadhya. First type, कृच्छाद्य. So कृच्छाद्य disease. Wait. We are discussing sadhya disease, in which we have studied susadhya disease. Susadhya. Now we are discussing about कृच्छाद्य. We are discussing about कृच्छाद्य. In कृच्छाद्य, we need surgical instruments to cure. Okay. Sankare cha tato gadah. Sankare arising due to combination, overlap of multiple dosas or disease. Subsequently, the type of disease. Okay. So, sir, ऐसी डिजीज जिसमें एक से दो डोसाज थोड़ा अफेक्ट हो रहा है. ओके. और जिसको सही करने के लिए कुछ सर्जिकली की रिक्वायरमेंट है, उसे हम कहते हैं कृच्छाद्य डिजीज. देन कम्स याप्य, असाध्य डिजीज. ऐसी डिजीज जो क्योर नहीं होती. उसका फर्स्ट टाइप है याप्य. शेषवत आयुषो याप्य. शेषवत आयुषो याप्य. पथ्याभियासात. पथ्याभियासात. द्विपर्यये. द्विपर्यये. Okay. So yappy disease are those diseases in which whole life is getting affected, and only the beneficial diet is helpful for recovery of the patient. Sesvat Ayusho persists strictly because a balanced portion of life is continuous. Pathyabhyasat maintained stable by a continuous wholesome diet and regimen. The yappy disease are maintained by continuous wholesome diet and regimen. Viparyaye flares up violently upon any unwholesome deviation mistake. अगर हमने डाइटरी रेजिमेंट को फॉलो नहीं किया तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिजीज फैलने लग जाएगा. दैट यहाँ पे डिजीज विल स्प्रेड फास्टर इफ वी डिडंट फॉलो दैट डाइट प्लान्स. ओके. So this is a yappy disease in which whole life is managed by a balanced diet. Then next, Seswat Ayuso Yapya Pathyabhyasat Dviviparyaye. Seswat Ayuso means remaining life. Remaining life is balanced by a balanced diet. Okay, then this disease is known as Yapya. If this Pathyabhyasat, if this regimen is not followed, then it will be Viparyaye, means then it will go opposite. Means Yapya disease is going to be increased. Anupakrama eva syat. Anupakrama eva syat. स्थितो अत्यंत विपर्यये. स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये. Then the second type is anupakrama. Okay. In anupakrama, it is totally incurable. Anupakrama eva syat definitely becomes absolutely untreatable. स्थितो अत्यंत विपर्यये, situated in absolute opposition to easily curable parameters. Easily curable disease के एकदम अपोजिट में जाके बैठा है अनुक्रमा, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इसका. दृष्टिरिष्टो, औत्सुक्य मोह अरतिकृत. नेक्स्ट पोर्शन, औत्सुक्य मोह अरतिकृत. दृष्टिरिष्टो अक्षनाशन. औत्सुक्य मोह अरतिकृत, causing extreme restlessness. In anupakrama, what is the symptoms? Extreme restlessness. कोई आराम नहीं है.
प्रोफाउंड मेंटल कंफ्यूजन, मानसिक रूप से एकदम प्रॉब्लम है, मेंटल कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस, जो हमेशा बेहोशी में रहता है। ओके, दृष्टि रिस्टोर, दृष्टि रिस्टोर मींस अकम्पेनिड बाय फैटल ओमेन्स और टॉक्सिक indicators. Okay, fatal ominence means the sense organs are gone, the sense organs destroyed, and the death can be occur. Here, drishti restore akshinashana, destroying the primary functional opacity of sensory organs. Sensory organs are destroyed, and the death can be occur. This is the anukrama. Again, we can read the sloka. Shastra adi sadhana krich shankarecha tato gada. Krich disease are those diseases which are cured by surgery. Sesvat ayuso yapya pathabhyasad viparyaye. Yapya disease are those diseases in which the remaining life is get balanced by a balanced diet. पूरी लाइफ एक अच्छा खाना पर डिपेंड करता है। अगर ये खाने में गड़बड़ी हो गई, ऑपोजिशन आ गया, तो यहाँ पे डिजीज वापस इंक्रीज हो जाएगा। इफ द बैलेंस डाइट इज नॉट फॉलोड, देन द अपोजिट हैपेंस एंड यहाँ पे डिजीज स्प्रेडेड इन अवर बॉडी। अनुपक्रम एव स्यात् स्थिति अत्यंत विपर्य। अनुपक्रम इज दैट डिजीज विच इज नॉट क्योरेबल। अनुपक्रम वो डिजीज जिसे क्योर नहीं किया जाता, और वो सारे डिजीज का एकदम अपोजिट है। अत्यंत विपर्य मीन्स अनुपक्रम इज प्योरली अपोजिट फ्रॉम सारे डिजीज। औत्सुक्य मोहर तिकृत दृष्टिष्टो अक्ष nachana. That anuprama disease causes autsukya means restlessness, moha means mental problem, aratikrit means distress, in distress. Drishti restore means that can be occur. Akshanasan means the sense organs are got destroyed. Okay, you read this in English. Okay, I have already explained all this in 2 to 3 times. The last sloka of the chapter. Okay, द कोड सर्विस रिफ्यूजल एंड पेशेंट कॉन्ट्रोडिक्शन। तो हमको कैसे पेशेंट्स को नहीं देखना चाहिए, त्याग योग्य लक्षण। पेशेंट विच कैनॉट बी ट्रीटेबल, विच कैनॉट बी ट्रीटेबल, अवॉइडेबल पेशेंट। ओके, ऐसे पेशेंट को हमको नहीं देखना चाहिए। त्यजेत, त्यजेत आर्तम, त्यजेत आर्तम। Tyajit artham means the physician should refuse. Tyajit means physician should refuse. Artham means patient, the patient, affected person. Tyajit artham. Tyajit means refuse. Artham means patient. The physician should refuse the patient. Bisak bhupe dishtam. Bisak bhupe dishtam. Here you can see bisak bhupe dishtam. Hated or rejected by doctors or state authorities. ऐसे पेशेंट को क्योर नहीं करना चाहिए जो इसको डॉक्टर खुद हेट करता हो और वहां का उस रीजन का राजा भी उसको हेट करता हो। ओके, भिषक मीन्स डॉक्टर। ओके, भूपे मीन्स द किंग, विष्टम मीन्स hated by the king and the doctor. So didn't check that patient. Tesham dvisham dvisham. Tesham means one who carries deep hatred towards physician or king, and that patient who hate the doctor and the king. Dvisham, one who carries generalized malice or hatred towards society, and the patient who hate the society should not be checked. Tyajit means refuse. Artha means patient. Refuse the patient who are hated by the physician and the king, and the patient who also hate the physician and the king and the society. Didn't check that patient. Hinopkaranam vyagram videyam gat ayusham. Hinopkaranam means lacking minimal medical infrastructure, drugs or caregivers. मतलब ऐसे पेशेंट जो गरीब हो, जो पुअर हो, लेकिन मिनिमल medical infrastructure, that patient didn't have that medical infrastructures, who cannot buy the medicines. Vyagram, highly anxious, physically restless or mentally distracted, didn't receive attend that patient which are highly anxious, which are mentally distracted. Don't check that type of patient according to Ayurveda. Avidheyam, disobedient and highly non-compliant with instructions. ऐसे पेशेंट जो आज्ञा ना माने डॉक्टर की, that wouldn't follow the words of doctor. Okay, vyagram videyam gat ayusham. Vyagram avideyam means disobedient, who didn't follow the instruction of doctor. Gat ayusham. Gat ayusham means the patient lifespan is very short. Lifespan is very short, then didn't check this type of patient. Chand, sok aturam. Chand, sok aturam. Chand means violent. The patient is violent, then didn't receive that patient. Sok aturam.
Sokatru means patient is in depression, depressed patient, didn't receive this type of patient. Bhirum means darpok. Bhirum means darpok, coward patient, don't check coward patient. Kritagnam, kritagnam means unthankful. Kritagnam means unthankful. ओके, उपकार नहीं मानने वाला, ऐसे पेशेंट को मत देखना. वैद्यमानिनम, एरोगेंट. वैद्यमानिनम means who consider himself a doctor. ऐसे पेशेंट को मत देखो जो खुद को ही डॉक्टर मानता हो. तो हमको ऐसे पेशेंट नहीं देखने. तेजतार्तम, ऐसे डॉक्टर को सॉरी ऐसे रोगी को रिफ्यूज करो. रिफ्यूज दैट टाइप ऑफ पेशेंट. Bhisak Bhupedishtam, which are hated by the Bhishak means physician, Bhupe means the king. Tesam Disham Disham, and the patient also hates the physician and the king. Didn't check this type of patient. हीन उपकरणम, उस पेशेंट के पास में कोई भी साधन नहीं होता है. Such type of patients which lack the instruments, medical instruments, he didn't have enough money. Vyagram Videyam. Vyagram Videyam means those patients which are disobedient to the physician. Gat Ayusham, ऐसे patient जो कि खत्म होने वाले, मरने वाले हैं. Okay, life span is very short. Chand means violent, didn't check this type of patient. Sokatru, depressed patient. Bhirum, coward patients. Darpok patient. Kritagna, unthankful to the physician. ऐसे physician की बात नहीं, physician को ग्रेट नहीं समझते, ऐसे पेशेंट को नहीं चेक करना. वैद्यमान, जो खुद को ही डॉक्टर माने, ऐसे पेशेंट को हमको चेक नहीं करना. ठीक है. You can read this English meaning. I have already explained. Okay, thank you. The first chapter is ended here.